Hello, good afternoon, everyone, and welcome to the Hindu editorial analysis of the 9th of January. Sorry about that. I hope I am visible and audible. Mm. Yes. So, hi, Ashu. Mahek, good afternoon. Good afternoon. Shivani, good afternoon. My hair is doing something today. Sorry that do not look neat and tidy. Hello, Shubhra. Anita, hello. हेलो माहिका आज हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स है बाय द वे today I hope that everybody has noticed that the class was at 12:30 and not 12. So those who were waiting since 12 and did not get the notification, please make sure that you subscribe to my Telegram channel so that you get all the updates. This is why Telegram channel is important, एवरीवन, क्योंकि इसी उसी से पता चलता है कि क्लास होगी या नहीं होगी या कब होगी. ओके, इफ देयर इज एनी चेंजेस यू विल गेट टू नो ओवर देयर. टमाटर जी, राज राइट. हाय, कैसे हो? काजल इज आल्सो हियर. काजल, हेलो. गुड आफ्टरनून. Manasvi, good afternoon. Good afternoon, everyone. And like I said, welcome to today's Hindu editorial analysis. And today we have a ton of words. So if you were not able to see the key timings change ho gaye hain, so then definitely you have not subscribed to my channel. It is called Unacademy underscore Vaishnavi underscore CLAT. Please make sure that you subscribe to the channel to get all the updates, okay, of my class. Let's get started with the words, guys. I'm really excited today क्योंकि आज हम बहुत सारे words करने वाले हैं, बहुत important words करने वाले हैं आज, okay? Harshika, hi, good afternoon, sweetheart. काजल, मैंने बोला कैसे भूल गई? Uchiha is Kajal, right? Or is it the original owner of the name? Oh, then Prabal, hi, good afternoon. Ansh. Okay, the real Uchiha, Ansh. Hello then, the real Uchiha. All right, ठीक है. Now this is very थोड़ा challenging हो जाता है जब आप अपना यूजर नेम चेंज नहीं करते हैं. I have to first remember कि अच्छा this person is this and then now it is back to that person. So it is very hard to remember that way. Apologies, everyone. Yes, Shivani, only for today it is at 12:30. Generally the timing is 12, okay? इसका timing 12 है, लेकिन आज के session के लिए 12:30 था, okay? It was just for today. Please take this class after some years. Sure. We don't even know what is going to happen next month. Some years is a long time, ठीक है? Uh, but this year, the entire year, it is going to go on. Again, next year we will see. Okay, so let's start with the first word. Please make sure that you're making as many sentences as possible. Okay, sentences banana mat bhulna. Okay, even if I'm checking it or not checking it, it is for your own benefit. आपके
बेनिफिट के लिए है। आशु, यस, शुरू करते हैं। भले के लिए, यस, आपके भले के लिए, राइट। राइट, एब्सोल्युटली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी विथ माय वोकैबुलरी। ठीक है, remission is the first word. The first word that we have is remission. Okay, remission is the noun form. Okay, ION आ गया है, so it is definitely a noun form. The cancellation of a debt, किसी debt को cancel कर देना या charge को cancel कर देना या penalty को cancel कर देना. Okay, that is remission. Okay, so when a debt, charge या penalty को cancel कर देते हैं, that is called remission. Okay. Okay, then we have sear. Okay, sear is a verb form, that means it can be changed into searing. Okay, remission, I hope it is clear. So अगर आपकी आप पे कोई debt है, कर्ज है, okay, उसको cancel कर दिया जा रहा है, which is very nice. Okay, अगर आपके friend ने cancel कर दिया सारे कर्ज आपके, so the friend has the friend has offered you a remission. Okay, the friend has offered you a remission. Okay, sear is a verb form which means of, अगर हम pain के बारे में बात करें, okay, be experienced as sudden burning sensation. अगर कुछ अचानक से जलता है, okay, that is sear. Okay, burning sensation is sear. Okay, so searing. पेनल्टी क्या होता है? पेनल्टी इज अ फाइन. ओके, पेनल्टी इज अ फाइन. आपने फुटबॉल में भी सुना होगा पेनल्टी लगता है. इफ यू आर सबमिटिंग समथिंग लेट तो पेनल्टी लगता है. अगर आप कुछ लेट सबमिट कर रहे हैं जिसका डेट से, डेडलाइन से आप एक्सीड कर रहे हो डेडलाइन, तो पेनल्टी लगता है. इट इज फाइन. ओके, द स्टेट गवर्नमेंट remissioned the debt of as high as 100 farmers in Maharashtra. Okay, okay. Now आप यूज कर रहे हो, देखो यहाँ रेमिशन है. ओके, इट इज अ नाउन, दैट मीन्स यू आर सपोज टू यूज इट एज अ नेम, बट आपने वर्ब की तरह यूज किया, विच इज नॉट रॉन्ग. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. जस्ट द थिंग, द स्टेट गवर्नमेंट रेमिशन the debt of as many as, because as high as नहीं होगा यहाँ पर. prices के बारे में नहीं बात करें, people के बारे में बात करें. as many as 100 farmers in Maharashtra. Okay, that's it. Very nice, good job. Yes, yes, all right. Indictment क्या होता है? This is also a noun. Indicted is the verb form. Indict is the verb form. Okay, indictment is a formal charge or accusation of a serious crime. ठीक है, देखो, अगर किसी पे आरोप लगाते हैं, ओके, फॉर्मल आरोप लगाते हैं कि उसने एक बहुत गंभीर और सीरियस गंभीर क्राइम किया है. Okay, so that is an indictment. Okay, a formal charge or accusation of a serious crime is an indictment. Okay, so we have looked at words like remission, sear, searing, seared. Okay, all these can be used because it is a verb, right? Indictment, indict. Okay, quash. Next one is quash. ये word आप बहुत ज़्यादा देखोगे. You will be seeing this word very often, so better get used to this word. The word quash is something that you will be seeing very often. Okay, बहुत सारे अभी ये high frequency word बना हुआ है. So whenever you see this word, you need to understand that it is reject as invalid. Okay, किसी चीज को invalid बोल देना. Okay, especially by legal procedures से किसी चीज को invalid बोल देना is to quash something. Okay, so quashing, quashes, you can change it into all the forms. Okay, sorry. Then we have convict and convict. Okay, convict is the verb form. Okay, convict is the person, which is the noun form. Okay, तो हमने दोनों का मतलब लिया है. convict pronunciation में difference आ जाता है. convict. Okay, convict is the noun form. Okay, convict क्या है? noun form है जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान
A person found guilty of a criminal offense and serving a sentence of imprisonment, okay, is a convict, okay. जिनको जेल हो जाती है, जिनको सजा हो जाती है, वो गिल्टी माने जाते हैं, उन पे जो आरोप लगा रहता है वो सही माना जाता है और उनको जेल हो जाती है, सजा मिलती है और वो सर्व करते हैं अपना सेंटेंस इन एज इन इम्प्रिजनमेंट, ओके। तो वो लोग को कहते हैं कॉन्विक्ट, ओके। एंड कन्विक्ट is declared someone, okay, which is the verb form, is declared someone to be guilty of a criminal offense by the verdict of a jury or the decision of a judge in a court of law, okay। So अगर किसी को convict कर दिया गया है मतलब किसी को जेल हो गई है उनको जज या जूरी ने उनका वर्डिक्ट सुना दिया है कि ये गिल्टी है ऑफ द क्राइम, ओके। सो दैट इज कन्विक्ट, ओके। कन्विक्ट समवन ऑफ अ क्राइम, ओके। Convict is the person, convict is the, sorry about that. Okay, is declaring someone guilty, okay। Next is heinous, okay। Heinous crime हम generally बोलते हैं heinous, okay। This is also a word that you will see a negative connotation वाला word है, okay। This is a negative connotation word, all right। Heinous is a negative connotation word, matlab ye hamesha it is used for negative things only, okay, never positive, okay। So the word is basically of a person or wrongful act, अगर हम किसी person के लिए भी use कर सकते हैं या किसी wrongful act, especially a crime, okay। ऐसे act के लिए wrongful act जो generally crime होता है या एक इंसान के लिए हम ये use करते हैं heinous, utterly odious और wicked, okay। बहुत ही भद्दा, okay। भद्दा भी नहीं, odious, all right, of a person or wrongful act, especially a crime, utterly odious or wicked, okay, something that is very, very, um, you know, really bad and loathful, okay, all right, one second, okay. So I have sentences over here. The tree was seared by lightning. Very nice, Manasvi. Good job. Good job. Good job. Uh, the plaintiff was convicted of the crime. Very nice, Ashu. Good job. His decision was subsequently quashed by a court. Very nice, Manasvi. Mehak, my mind blows when I see him doing such a heinous act. Very nice. Good job. Very nice. Mehak, something like that is being used in today's editorial as well. हम उसके बारे में बात करेंगे when we come to it, okay। Verdict is noun, okay, a decision on an issue of fact in a civil or criminal case or an inquest, okay। So verdict क्या होता है कि एक decision होता है जो issue किया जाता है, okay, that is a verdict। I'm sure everybody understands verdict। Pogrom, ओके, पोग्रिम इज वेरी सिमिलर। ये वर्ड भी बहुत ज्यादा आजकल यूज होता है, ओके। इट इज हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड स्पेशली इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज, ओके। So pogrom is an act of organized cruel behavior or killing that is done to a large group of people because of their race or religion, okay। So pogrom किसको कहते हैं? एक ऐसे एक्ट को कहते हैं, एक ऐसे क्रूअल एक्ट को कहते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेटेड होता है, ओके। उनके प्रति अगर कोई उनके रेस के प्रति देयर इज किलिंग और
for a certain race, towards a certain race, directed towards a certain race or religion, that is a pogrom. Okay, organized cruel behavior of killing that is done to a large group of people because of their race or religion. Okay, सॉरी. तो ये जूस के साथ होता था, एंड दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम देयर. ओके, लेकिन इट इज नाउ रेफरिंग टू एनी रेस या रिलीजन के तरफ अगर डायरेक्टेड क्राइम हो रहा है तो. ओके, दैट इज अ पॉग्रम. अनइक्विवोकल. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अनइक्विवोकल. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इक्विवोकल होता है मतलब जानबूझ के ऐसे डिवियस से स्टेटमेंट्स देना, मतलब एम्बिग्यूअस से स्टेटमेंट्स देना. अनइक्विवोकल इज साफ साफ, लीविंग नो डाउट. ओके, कोई डाउट नहीं है कि क्या बोला गया है, कोई डाउट नहीं कि क्या डिसीजन है, कोई डाउट नहीं है कि क्या सोच रहा है इंसान या क्या बोल रहा है इंसान. ओके, इट इज क्लियर, assertive, and it has got no ambiguous statements. Okay, so unambiguous. Okay, so not trying to confuse, very clear and stated directly. Okay, next word is disgraceful. Disgraceful is an adjective. Okay, disgraceful is an adjective which means shockingly unacceptable. Okay, so disgraceful आपको पता होगा, lot of times it is used in schools and by principal that what you did was disgraceful. Okay, all right. Then we have facilitate. Facilitate is make an action or process easy or easier. Okay, facilitate something. The facilitator of this show or this concert is this person. Okay, that means this person is going to make the job of everyone easier. Okay, basically किसी का किसी एक्शन या प्रोसेस को easy कर देना is facilitate. Okay, so facilitator is the person. Okay, facilitate is the verb form, that means you can change it to facilitated, facilitating, facilitates. Okay, so all these are the words. So we did remissions here: indictment, quash, convict, heinous, verdict, pogrom, unequivocal, disgrace, and facilitate in this page. Oh, thank you. Sorry. The plaintiff was convicted of the crime. Very nice. Uh, his decision was subsequently quashed by a court. Very nice. My mind blows when I see him doing such a heinous act. ये मैंने पढ़ लिया है. Guys, sentences, come on. You cannot just sit there and do nothing. आपको भी, you have to engage yourself in the class. Please make sure that you're making sentences, not just Manasvi and Ashu and a handful of you. सबको sentences बनाना है. The jury returned an unanimous. The jury returned with a unanimous guilty verdict. Okay, with a unanimous guilty verdict. Okay, very nice. A pilgrim family were pogromed by an aggressive mob while they were on the way to Vaishnavi. Very nice. Okay, okay. His answer was short, clear, and unequivocal. Very nice, Manasvi. Good job. Ashu, if there is no doubt about it, it's unequivocal, right? An unequivocal response to a marriage proposal. Yes, 1,000 times yes. Okay. Yes, that would be a perfect example of unequivocal. His answer was short, clear. ये मैंने पढ़ लिया. Okay. Manasvi, the judges passed the verdict of remission of the culprits. Very nice. Mahika, very nice. Hello, Apurva. Hello. बहुत late हो गई आप. All right, moving on to the next set of words. This is the last set of words that we are going to be doing. Okay. All right.
नेक्स्ट इज jurisdiction. ओके, jurisdiction इज अ नाउन, ओके, जिसका मतलब होता है द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट्स. ओके, jurisdiction क्या होता है? ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट इज jurisdiction. ओके, किसी किसी के jurisdiction में आता है कि नहीं, डू दे हैव द ऑफिशियल पावर टू डू समथिंग अबाउट इट और नॉट. ओके, दैट इज अ jurisdiction. ओके, jurisdiction किसी चीज का क्या होता है? Sorry, guys, I got distracted by a strand of hair. That's all it takes to distract me. A strand of hair. That's all. My God. All these years of meditation and still getting distracted by a strand of hair. Wow. ओके, jurisdiction किसी के ऑफिशियल पावर के अंदर में रेंज उनका है कि नहीं. ओके, सो इफ समवन सेज दिस डज नॉट कम अंडर योर jurisdiction या दिस डज नॉट कम अंडर द jurisdiction of the local police, so that means इनके पावर में नहीं है ये. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज टैंडम. देखो, टैंडम बेसिकली क्या होता है ना, ये जो बाइसिकल होते हैं ना, जिसमें यू हैव a seat for two people, right? What did I do? A seat for two people, right? That is called a tandem. Okay, that is basically called a tandem. ठीक है, तो अब उसी के बेसिस पे दिस इज द डेनोटेशन ऑफ द वर्ड टैंडम. लेकिन उसी के बेसिस पे हम इसका कॉनोटेशन निकालते हैं. ओके, इफ समथिंग इज डन इन टैंडम, अच्छा, इन टैंडम अगर लिखा हुआ है, ओके, दिस वाज डन इन टैंडम, तो टू पीपल डेवलप और वर्क ऑन इट टुगेदर और ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम. ओके, दो लोग एक ही साथ किसी चीज पे काम कर रहे होते हैं, तब इट इज डन इन टैंडम. ओके, सो हम हमेशा क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन इन यूज करते हैं विथ टैंडम. ओके, सो दिस वाज डन इन टैंडम मतलब दो लोग एक साथ इस चीज पे काम कर रहे थे. ठीक है, ओके, दैट इज टैंडम. ओके, सो दिस इज द न्यू वर्ड. द पुलिस declined to file an FIR against the accused as it was not under its jurisdiction. Very nice, very nice. Good job, Prabal, good job. Complicit. Complicit is the next word. ये भी बहुत important word है. You must know this word. Complicit is an adjective जिसका मतलब होता है involved with others in an activity that is unlawful or morally wrong. Okay, complicit is are you complicit in this act? Okay, so that means are you involved with someone else in this act, in this wrongful act, unlawful act. Okay, complicit होना मतलब कोई ऐसे चीज में involved होना with someone, ठीक है, जिसमें which is wrong, which is unlawful or morally wrong. ठीक है, तो he is complicit in this whole um, scenario, okay, or in this crime. Okay, defunct. Okay, defunct is no longer existing or functional. Okay, so defunct is no longer existing or functioning. So कोई चीज defunct तब हो जाती है जब वो या तो exist नहीं करती है, अब obsolete हो जाती है. Okay, another word would be obsolete. Okay, ऑब्सोलीट हो जाती है या फंक्शन नहीं करती है अब. ओके, सो आइदर इट इज ऑब्सोलीट और इट इज नो लॉन्गर फंक्शनिंग. ओके, दैट इज डिफंक्ट. ओके, दिस इज एन एडजेक्टिव. देन वी हैव सप्रेशन. सप्रेस करना किसी चीज को इज बेसिकली इज अगेन अ नेगेटिव कॉनोटेशन वर्ड. ओके, सप्रेशन ऑफ समथिंग. ओके, द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग from being seen or expressed or from operating. Okay, तो basically किसी चीज को suppress करना is किसी को दबा के उनका मुंह बंद करा देना is also suppression if you are suppressing a person. Okay, if you are suppressing an act, you are basically trying to hide it, bury it in the ground. Okay,
sweep it under the carpet, bury it in the ground, okay, whatever you want to do, want to say. It is suppression, okay, किसी चीज को prevent करना from being exposed or from operating or from being expressed, okay. Hmm. That is suppress, okay, that is the verb form. Suppression is the noun form, okay. Usurpation, okay, usurpation is another word that you should know. Usurp karna is the verb form, usurper is the person, usurpation is again the noun form, okay. Usurper is also the noun form, okay. So the act of taking control of something without having the right to, specially of a position or of power, okay. आपको कोई अगर हक नहीं है किसी पोजीशन पे बैठने का, किसी की गद्दी पे बैठने का, लेकिन भी आप बैठ जाते हैं, okay. Generally in the position of power, you are snatching control without having any authority over that seat, okay. So that is usurpation. At my school, my principal and teacher were coming to our class and doing tandem. And doing it sound it's sorry. It sounds like अपूर्वा तांडव कर रहे थे आपके. And were in tandem. Okay. At my school, my principal and teachers were in tandem uh, in our classes, and we were worried about who sent them to our class. मैं तो स्कूल ही नहीं जाती. Okay. Hmm. All right, but you are still, I still want. Ote. The verdict of the court was disgraceful to the prosecutor. Very nice. Good job. The police decline wala. Okay. ये वाला तो हो गया. Okay. Good job. Then we have reiteration. Okay. Reiteration का मतलब क्या होता है? This is also an important word. आप बहुत देखोगे reiterate करना. Okay. That is the verb form, and reiteration is the noun form. I hope you are getting this. Okay. Reiterate is the verb form. That means you can use it as an action. So reiterate, reiterating, reiterates. Okay. All this form you can use for reiteration. And tion aa gaya, so it is definitely the noun form. The act of saying something again, again, once or several times. Okay, किसी चीज को बार बार दोहराना is to reiterate, ताकि मैसेज क्लियरली आप पहुंच जाए आप तक. ओके. जनरली अगर आप ऐसे इंसान हो जो घर पे ध्यान नहीं देते हो अपनी मम्मी के बात पे, तो वो क्या करती है, अगर उनको कुछ सामान मंगवाना होता है तो वो बार बार आपको रीआइटरेट करती है कि दिस इज द सामान, ले आना, धनिया पत्ता, धनिया पत्ता. आई रिपीट, धनिया पत्ता. ओके. All right, that is reiteration. Okay. Animate is anything that has life. Okay. Animate कोई भी चीज जिसमें life होता है. Inanimate is anything that is non-living. So living and non-living जैसे हम पढ़ते थे पहले, उसी को animate and inanimate बोलते हैं अब. Okay. So this is adjective. Okay. And finally we have omnibus. Okay. Omnibus. Omnibus. Okay. So this is a noun which is an omnibus is a program consisting of two or more parts that have already been broadcast separately. Okay. एक omnibus एक ऐसा program का part होता है जिसके दो parts होते हैं. उसमें से एक part already broadcast हो गया है separately. Both the parts are already broadcasted separately. Okay. So omnibus is a program consisting of two or more parts that have already been broadcast separately. All right. Usurpation. Okay. This helps. Usurpation is the act of taking control of something without having the right to, especially of a position of power. All right.
So these are the words on this page: jurisdiction, tandem, complicit, defunct, suppression, usurpation, reiteration, animate, omnibus. All right, these are the words. Now, we would like to congratulate our CLAT topper 2024, Yashasvi Dhakar, with All India rank 8. And these are our other top rankers who have studied from Unacademy and have made it to the top 80 NLUs. Maestro batch is a batch for MHCT and CUET UG 2024. You can use my code Vaishnavi10 to enroll in this batch. Target NLU is a droppers batch for CLAT 2025. Again, you can use my code Vaishnavi10 to enroll yourself in this batch. CLAT iconic program के फायदे क्या हैं कि you get everything in plus raise a hand feature plus live mentoring session, detailed physical notes that will be delivered at your doorstep, printed full and mock test that will be delivered at your doorstep, and you will be able to attend offline mock test at our academy center. All right, let's get started with the editorial of today. Okay, let's get started with the editorial of today. And pens and highlighters out, everyone. Pens and highlighters out, everyone. Reiterates that word. Whenever, okay, basically you mean bad word, right? Wrong, not wrong word, bad word. Whenever some bad word words comes out of my come out of my mouth, and my sister, no, not and, यहाँ पर continuation नहीं होगा, my sister, okay, after comma my sister reiterates that word until I get scolded by my mother. Okay, Bilkis Bano, yes, this is the editorial. Yes, absolutely. So let's get started with this editorial. Unlawful remission. Okay, this is the title that is given. Okay, and then SC ruling, a searing indictment of Gujarat for aiding convicts release. Okay, so this becomes the conclusion. This is basically a comment that is given over here as a conclusion. Okay, so basically isme the author is not giving a lot of um, what should be done, advisory nahi hai. That means the tone of this editorial. Okay, all right, so let's find out the main idea. Okay, the Supreme Court of India verdict quashing the order releasing 11 men convicted for the heinous gang rape and murder of several members of a family during the Gujarat pogrom in 2002 is an unequivocal indictment of the state government. Okay, okay, so basically it is saying कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट था जिसमें उन्होंने क्या कर दिया, क्वॉश कर दिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वॉश? कैंसिल कर दिया. जो ऑर्डर्स रिलीज के ऑर्डर्स थे, राइट, रिलीज के जो ऑर्डर थे 11 मेन को, जो जिन्होंने एक बहुत ही भद्दा गैंग रेप में इन्वॉल्व थे और मर्डर ऑफ सेवरल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. ओके, एक फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को का मर्डर कर दिया था ड्यूरिंग गुजरात पोग्राम. ओके, गुजरात में जो पोग्राम हुआ था उसमें इन 2002 is an unequivocal indictment of the state government. Okay, state government का unequal मतलब it is very very clear कि state government को criminal घोषित करने का एक बहुत ही साफ साफ, बेसिकली साफ साफ ये है टारगेट था एससी का. ओके, कैंसल्ड. यस, yes, very good article. Yes, it is a very good article, and it is something that we all this is why सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए हमें
ऐसे ही डिसीजन से पता चलता है कितना पावरफुल है हमारा judiciary, right? Um, the men had been sentenced to life by a sessions court in Mumbai after the investigation in the Bilkis Bano case was shifted from the Gujarat police to the Central Bureau of Investigation and the trial transferred to Mumbai. Okay, so basically, ये जो men थे इनको sentence कर दिया था for life by a sessions court, okay, मुंबई में, ठीक है, ये वाले इन्वेस्टिगेशन में, बिल्किस बानो केस वाले इन्वेस्टिगेशन में। और उसके बाद फिर उनको शिफ्ट कर दिया था फ्रॉम द गुजरात पुलिस टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में शिफ्ट कर दिया गया था इस चीज को, और उसके बाद उनका ट्रायल को ट्रांसफर कर दिया गया था मुंबई में। ओके, अ डिसग्रेसफुल, बहुत ही डिसग्रेसफुल को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस? डिसग्रेसफुल को हिंदी में क्या कहते हैं? um Okay, till you give me the answer, let's continue. A disgraceful story that began with the Bharatiya Janata Party government facilitating their premature release and the freedmen being garlanded by their supporters has now ended with the court directing them to return to prison within 2 weeks. Okay, so yes, शर्मनाक, yes, absolutely. So ये जो शर्मनाक घटना स्टोरी थी, ओके, जिसमें बीजेपी, ओके, गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही थी, उनका काम आसान कर रही थी, उनका प्री मेच्योर रिलीज करा दी, मतलब उनके रिलीज डेट से भी पहले उनको छुटवा दी। ओके, और उसके बाद उनको माला पहनाया जा रहा है, उनके सपोर्टर्स उनको माला पहना रहे हैं, और ये सारा नाटक जो है ये बंद हो गया है जब कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि वापस से जाओ प्रिजन। ओके, विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर अंदर इनको वापस से प्रिजन भेजना है। ओके, this is what the court has said. The verdict is based on the ground that Gujarat did not have any jurisdiction to decide on granting remission to convicts sentenced in Maharashtra. Okay, so basically verdict अब किस basis पे आया है कि गुजरात को कोई right नहीं था कि अब इसमें ये वर्डिक्ट जो आया है ये किस चीज पे बेस्ड है कि गुजरात को कोई जुरिस्डिक्शन, कोई पावर नहीं था कि वो बेल ग्रांट कर दे, वो उनको उनका उनका रिलीज ग्रांट कर दे। ओके, टू कॉन्विक्ट सेंटेंस इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो सेंटेंस हुए हैं उसको गुजरात के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है उसका। ओके, तो in a telling observation, the bench comprising Justice B.V. Nagar, Nagaratna and Ujjal Bhuyan said the state of Gujarat has acted in tandem. Okay, they have acted in tandem and was complicit in one of the convicts' petition for a direction or to the state government to grant remission of the remainder of his life term based on a defunct 1992 policy. Okay, so basically अब ये दोनों हमारे जो जस्टिस है, ओके, इस बेंच में क्या इन्होंने बताया कि ये जो इन दोनों ने क्या बोला कि जो स्टेट ऑफ गुजरात है, ठीक है, ये किसके साथ एक्ट हैज एक्टेड इन टैंडम एंड वाज कंप्लिसिट। ओके, ये उनके साथ ही साथ काम की है। ओके, गुजरात गवर्नमेंट ने उनके साथ मिलके काम किया है और ये कंप्लिसिट है उसमें। ओके, दे वर आल्सो पार्ट ऑफ दिस क्राइम। ओके, और उन्होंने क्या किया, रेमिशन ग्रांट कर दिया उनको, बेल ग्रांट कर दिया उनको, रेमिशन ग्रांट कर दिया उनको, छूट दे दिया उनके पनिशमेंट से। बेस्ड ऑन किस चीज पे बेस्ड था? डिफंक्ट पॉलिसी 1992 का एक पॉलिसी जो नो लॉन्गर इन यूज है, फंक्शनिंग नहीं है ये पॉलिसी, ये लॉ फंक्शनिंग नहीं है, उसके बेसिस पे इनको क्या कर दिया, इनको छूट ग्रांट कर दिया। ओके, it has noted that the Gujarat government, which took the correct stand during earlier proceedings, that only the government of Maharashtra, where the trial and sentencing took place, was the appropriate government to consider remission, had failed to seek review of a two-bench judgment's order in May 2022, even though it was wrongfully decided based on suppression of material facts.
ओके। तो बेसिकली अब गुजरात गवर्नमेंट पहले तो इन्होंने सही स्टैंड लिया था, ओके, कि महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा, दे हैव नो रोल ओवर हियर, जहां पर ट्रायल हो रहा है, जहां पे सेंटेंसिंग हो रहा है, वही वही डिसाइड करेंगे। अम, और वही डिसाइड करेंगे कि करेक्ट रेमिशन क्या होता है। लेकिन इन्होंने कोई भी रिव्यू नहीं सीक किया इस चीज का, ओके। टू बेंच जजमेंट का रिव्यू नहीं सीक किया, ओके। दे डिड नॉट आस्क फॉर रिव्यू फ्रॉम द टू बेंच जजमेंट्स, ओके। मई 2022 में, इवन दो इट वाज रॉन्गफुली डिसाइडेड बेस्ड ऑन सप्रेशन, और तब भी नहीं उन्होंने रिव्यू सीक किया ऑफ द टू बेंच जजेस जजमेंट्स। जब रॉन्गफुल डिसीजन बनाया जा रहा था, ओके, रॉन्गफुल डिसीजन बनाया जा रहा था, किस चीज पे? सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स को सप्रेस करके, ओके, उनको दबा के, सच को छुपा के, सबूत को छुपा के, ओके, इन साइटिंग द कोर्ट डायरेक्शन एज द रीजन फॉर इट to pass orders in favor of the convicts, the state government was guilty of usurpation of power, the bench said, okay. So state government इस चीज का guilty है, okay. Basically the Supreme Court said कि ये सारे facts को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जानबूझ के कॉन्विक्ट्स के फेवर में इन्होंने एक्ट किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, एंड दे आर गिल्टी ऑफ यूजरपेशन ऑफ पावर, ओके। पावर, ऐसे पावर अपने हाथ में लेने का जो उनके हाथ में नहीं थी, ओके। बेंच ने ऐसा कहा, ओके। आई गेट पीडीएफ ऑफ द सेम, ऑफ द जो भी फैक्ट्स, जो सबूत थे, ओके, उनको दबाया गया था, ओके। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, शिवानी। पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा? वी विल सून स्टार्ट द पीडीएफ, बट वी डोंट, हम स्टार्ट करेंगे पीडीएफ, ओके। राइट नाउ वी डोंट हैव द पीडीएफ, बट वी विल स्टार्ट द पीडीएफ वेयर यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ द entire editorial along with the annotation, ठीक है शिवानी? The ruling represents a blow for the rule of law and the restoration of faith in the judiciary at a time when there are doubts about the institution's capacity to hold power to account, okay? क्या कह रहा है? ओके आशु, नोटेड। आई विल मेक श्योर दैट दिस हैपेंस सून, ओके। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो रूलिंग आया है, ओके, ये एक बहुत बड़ा ट्रायम्फ है ऐसे टाइम पे, ओके। रेस्टोरेशन ऑफ फेथ, फेथ वापस से इनका लोगों का सुप्रीम कोर्ट पे अब बढ़ जाएगा। और ये बहुत अच्छे टाइम पे आया है क्योंकि अभी ही लोगों का फेथ, भरोसा उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट से और ये जुडिशरी पावर से, कि वो अपने पावर होल्ड कर सकते हैं कि नहीं, एंड होल्ड पावर टू अकाउंट, अकाउंटेबिलिटी किसी को, किसी का बेसिकली अपने पावर को जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं, ओके। सो ऐसे टाइम पे आया है जब लोगों का भरोसा उठ रहा था जुडिशरी से, एंड दिस इज रिस्टोरिंग द फेथ बैक टू द जुडिशरी पावर ऑफ रूलिंग, ओके। On merits, it is a timely reiteration of the core principles that animate exercise of the power to grant remission, okay. So बेसिकली एनिमेट का मतलब यहाँ कुछ और है, ओके, और मैंने कुछ और मतलब से लिखा है, ओके, बट स्टिल डज नॉट मैटर। ऑन मेरिट्स अगर देखा जाए तो ये इनके कोर प्रिंसिपल्स के बारे में दी ऑथर इज बेसिकली बड़ाई कर रहा है कि इनके कोर प्रिंसिपल पे को दिखाता है, दर्शाता है, ओके, कि एक्सरसाइज ऑफ पावर टू ग्रांट रिमिशन, दैट इट शुड बी फेयर, ग्रांट रेमिशन के बेसिस पे, ओके। दिस इज टॉकिंग अबाउट, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कि अगर देखा जाए कि किसको ग्रांट कर सकते हैं रेमिशन, तो उसका एक बहुत सही एग्जाम्पल है ये, कि उस
केस में, बस उस केस में हम ग्रांट कर सकते हैं रेमिशन जब इट इज फेयर एंड रीजनेबल and based on a set of relevant parameters such as whether the crime involved affected society at large, whether the convict retained the potential for committing similar offenses or is capable of reform. Okay, तो रेमिशन इसी के बेसिस पे ग्रांट किया जाता है किसी को कि क्या ये क्राइम बहुत लोगों को अफेक्ट किया था, सोसाइटी में एट लार्ज डिड इट अफेक्टेड, ओके, क्या ये कॉन्विक्ट इनके पास पोटेंशियल है कि वापस से ऐसा कुछ क्राइम कर सकते हैं, क्या ये ऑफेंस रिफॉर्म के मतलब ये सुधर सकते हैं, इसके केपेबल है कि नहीं, ओके। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड कि आप तब रेमिशन दे सकते हो किसी का, तब आप ग्रांट कर सकते हो रेमिशन किसी को जब ये सारे कैटेगरीज में मीट होते हैं, विच वाज नॉट द केस ओवर हियर, ओके। दे जस्ट ग्रांटेड रेमिशन टू अ बंच ऑफ गैंग रेपर्स, ओके, and it affected the society at large. It affected a lot of people, and especially the victims of those crimes. The release of life convict, who are generally expected to spend the entirety of their lives in prison unless remission is granted after a prison term that should not be less than 14 years, ought to be individually considered and not part of any omnibus gesture without regard to the impact of their freedom on the victims, survivors, and society. Now the author is basically saying कि अगर ऐसा कॉन्विक्ट, ओके, एक ऐसा इंसान जिसको जेल हुई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, उसको उसको अगर हम गुड बिहेवियर के बेसिस पे अगर हम फिर भी उनको रेमिशन ग्रांट कर रहे हैं, ओके, फिर भी रेमिशन ग्रांट कर रहे हैं जो 14 साल काटने के बाद नहीं, के पहले नहीं होना चाहिए, उनको भी इंडिविजुअली कंसिडर करना चाहिए, नॉट एज अ ग्रुप, ओके, उनको एज अ ग्रुप नहीं कंसिडर करना चाहिए, इंडिविजुअली कंसिडर करना चाहिए कि उनका फ्रीडम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, विक्टिम्स उनके फ्रीडम का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, विक्टिम्स पे, सर्वाइवर्स पे, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब देख के उनको रेमिशन ग्रांट करना चाहिए। ऑलराइट, any rational remission policy should encompass humanitarian consideration and the convict's scope to reform without violating the rule of law of societal interest. In this case, none of those conditions for remissions was met. Okay, so basically, finally, the author is saying कि अगर कोई भी rational, practical अगर remission grant हो रहा है, ठीक है, policy, उसको सारे ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज जैसे कि ऑथर ने मेंशन किया, विक्टिम, सर्वाइवर, सोसाइटी, ये सारे पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा उस उनके छूटने का, ये सारा कुछ कंसिडर करके उनको रेमिशन ग्रांट करना चाहिए। और इस केस में ऐसा कुछ नहीं कंसिडर हुआ था, ओके, इस केस में ऐसा कुछ नहीं कंसिडर हुआ था। सो बेसिकली द ऑथर हैज एंडेड द एडिटोरियल एट दिस, ओके। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, what is the tone of today's editorial? टोन क्या होगा? बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था, हाय रुनीत, स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि एडवाइजरी तो नहीं होगा, द ऑथर इज नॉट एडवाइजिंग ओवर हियर, ओके। आर्डेंट, अप्रिशिएटिव, अप्रिशिएटिव, इंफॉर्मेटिव, ओके। महक अगेन, नॉट एडवाइजरी, नॉट इंफॉर्मेटिव, दिस इज डेफिनेटली क्रिटिकल, ओके, critical. Then now the author is being a little moralistic, है ना, didactic है, it is the author is यहाँ से यहाँ तक आप देखो कि किस बेसिस पे रेमिशन ग्रांट किया जाता है और कैसे लोगों को ग्रांट करना चाहिए रेमिशन, ओके। सो द ऑथर इज ट्राइंग टू टीच अस समथिंग, ओके, didactic, moralistic, okay, all these will be the, ठीक है, tone of today's editorial. Very nice editorial. If you want to read it again, please do read it again. And I hope this is clear. I will see you again. Those who are preparing for CUET, I will see you again at 5. And optimistic meaning,
ऑप्टिमिस्टिक इज बेसिकली बीइंग होपफुल अबाउट द फ्यूचर. अगर आप फ्यूचर को ऐसे देखते हो, फ्यूचर कैन बी समथिंग लॉन्ग टर्म एज वेल, समथिंग in the very next moment as well. अगर आप उसमें hopeful हो, okay, so for example if you are looking at something in the sense कि um, अच्छा हो जाएगा, मुझे तो लगता है सब कुछ अच्छा होगा, ओके, मुझे तो लगता है इस केस में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कोई नहीं ये वाला हो गया लेकिन अब तो सब कुछ अच्छा हो गया, ओके. सो बेसिकली होपफुल अबाउट द फ्यूचर इज ऑप्टिमिस्टिक, ओके. इसका ऑपोजिट होता है पेसिमिस्टिक विच इज होपलेस अबाउट द फ्यूचर. कुछ सही नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद है, सब कुछ नष्ट है, ओके. दैट इज पेसिमिस्टिक. आशावादी, yes. Thank you everyone for attending the session, and please do not forget to like the video and subscribe to the channel. All right, I will see you again in the next session. Stay tuned for more. Bye bye everyone. Take care. Auf Wiedersehen. Tschüss and Maxi and bye bye. You are welcome. Au revoir. Mehek and Ravneet. Ravneet, au revoir.